से कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आप बोलना चाहेंगे? आज फिकी फ्लो मुंबई चैप्टर के ट्रेल ब्लेजर्स अवार्ड्स के लिए आना मेरा सौभाग्य है। आज वी हैव द प्रेसिडेंट मैम विद अस एंड बहुत ही अलग अलग एरियाज से इन्होंने जो स्त्रियाँ हैं जिन्होंने बहुत उम्दा कार्य किए हैं, they have selected these ladies and highlighted their work. It is really inspiring for others also to follow this trail and be women achievers. मराठीत सांगा, Thank you. महिला सशक्तीकरणाबद्दल तुम्ही बरंच काही बोललात. त्याशिवाय वेगवेगळ्या फील्डमधल्या महिलांना अवॉर्ड्स भेटले आहेत. काय सांगाल कशा प्रकारे हा कार्यक्रम होता आणि महिला सशक्तीकरण? मी आज फिकी फ्लोच्या ट्रेल ब्लेझर्स या वुमेन अचिव्हर्स अवॉर्डसाठी आलेली आहे. त्यांच्या प्रेसिडेंट आपल्याबरोबर आहेत, विश्वासजी पण आपल्याबरोबर आहेत, विश्वासजी नागडे पाटील. आणि खूपच चांगला असा हा कार्यक्रम झाला. इथे आम्ही स्त्रियांना अवॉर्ड केलं, त्यांना पुरस्कृत केलं, ज्यांनी आपल्या जीवनात आणि आपल्या प्रोफेशन्समध्ये वेगळे उंच स्तर गाठलेले आहेत. तर मला वाटतं यांना पाहून बाकीच्या स्त्रियाही इन्स्पायर होतील आणि यांना असं प्लॅटफॉर्म दिल्यासाठी फिकीला मी धन्यवाद देते. Thank you so much. What do you want to say on Women's Achievers Award? I'm happy that I just attended Fiki Flow Mumbai Chapter's Women Achievers Awards Trailblazers. The president of the Fiki Flow is with us, and I'm very happy. Vishwasji Nagri Patil is also with us. They have given platform to women who have achieved in various areas of their expertise, and I'm sure this will further inspire many more women to come to the forefront and showcase their best to the world. एकीकडे पॉलिटिकली सुद्धा म्हणजे ब्लॅकमेलिंग प्रकरणामध्ये जेव्हा आरोपींना ताब्यात घेण्यात आलं, त्यानंतर कुठेतरी महिलांकडनं म्हणजे पॉलिटिकल महिलांकडनं आरोप करण्यात आले. कसं बघता तुम्ही असं? आज हा खूप चांगला असा इव्हेंट आहे ट्रेल ब्लेझर्स. मला वाटतं मी बाकी काहीही बोलणं ह्या इव्हेंटसाठी ठीक नाही राहणार. तर दिस इज अ सेपरेट टॉपिक एंड मे बी वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर. मैम, आज आपने महिलाओं को सम्मानित किया, इतनी सारी महिलाएं यहाँ उपस्थित थी. क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से महिलाओं को इंस्पिरेशन मिलती है इस कार्यक्रम के द्वारा? मैंने जैसे कार्यक्रम में भी बोला कि कोई भी अवार्ड जब किसी महिला को दिया जाता है तो वो सिर्फ उसे नहीं दिया जाता, उस हर महिला को दिया जाता है जिसने उसको सपोर्ट किया है, उसके पीछे खड़ी रही है. तो ऐसा एक कैस्केडिंग इफ़ेक्ट होता है जिससे हर महिला को एक इंस्पिरेशन मिलता है कि वो भी कुछ करे अपनी जीवन में. चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, पर वो चैलेंजेस को ओवरकम करके, हैंग ऑन करके वो कितना आगे बढ़ सकती है, ये सब महिलाएं उसका उदाहरण है. दैट्स वेरी गुड. थैंक यू. राहायला पाहिजे आणि सशक्तीकरणासंदर्भात नाही, या कार्यक्रमामध्ये फिकी फ्लोनं एक खूप पॉझिटिव्ह आणि कन्स्ट्रक्टिव्ह असा इनिशिएटिव्ह दाखवलेला आहे की वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या महिलांचा सन्मान या व्यासपीठावर करण्यात आला. मॅडम फडणवीस यांनी खूप चांगल्या शब्दामध्ये या गोष्टींची तारीफ तर केलीच, पण विशेष करून महिला कॉन्स्टेबल्सच्या प्रश्नांनासुद्धा त्यांनी हात घातला. इट वॉज रिअली अ प्रिव्हिलेज टू विटनेस दिस पॉझिटिव्ह इनिशिएटिव्ह, टू फेलिसिटेट women from all walks of life, and I'm so happy to attend this program. I congratulate Khandwala ma'am, who is the chairperson of Fiki Flow Mumbai chapter, Niti Goyal and the entire team. Thank you so much. कुछ दो एग्जाम्पल भी देके आपने कुछ सलाह भी दी महिलाओं को, क्या कहेंगे सर? I told about the awareness tips. खास करके एनफोर्समेंट से ज़्यादा अवेयरनेस एंड एजुकेशन इम्पॉर्टेंट होता है, तो उस हिसाब से मैंने कुछ बातें बताई. लेकिन ये टू एजुकेट आवर यंग टीनेजर चिल्ड्रन एंड गर्ल्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आई फोकस्ड ऑन दैट. थैंक यू. Thank you. So this event is organized by Fiki Flow. It's Trailblazers. So एक अवार्ड एक्चुअली अपने अंदर एक महत्व होता है कि इट गिव्स एन इनकरेजमेंट कि हाँ वी आर ऑन द राइट पाथ. So I think it is a reassurance, and I'm thankful to Fiki Flow for giving this honor to all the women who have achieved something in their field. And I would encourage all women to do something, because a woman is a full circle in herself. She has the power to create, nurture and transform. Sorry, can you come again? These awards will continue. Yes, these awards will continue year after year. We only want to encourage women to do better and better, and that's why we will definitely continue these awards. Thank you. It was amazing what she's doing for
women empowerment and encouraging all the women is incredible, and I'm very happy that I got a chance to attend this event and keep doing this. I would really appreciate it. सर आपका क्या कहना है इस पूरे वेल पहली बात तो थैंक यू धनिया जी एंड जी कि मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया है इस इवेंट पे। वुमेन को एनेबल करना और जिसको रिकग्नाइज करना उनकी अचीवमेंट्स, आई थिंक एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो फिकी फ्लो कर रहा है। और विमेन अचीवर्स का हमेशा एक आगे का वो एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उनको एक एनकरेजमेंट मिलता है इस इसके ज़रिए। तो आई थिंक ये एक बहुत अमेजिंग इनिशिएटिव है और मैं इसे हमेशा सपोर्ट करता रहूँगा। Thank you so much. So I think I'm very, very grateful and great thanks to Niti Goyal for helping us today in achieving such a good array of dignitaries. Like we had Amrita ma'am, we had Mr. Vishwas Nagdekar, we had Mr. Avi Mittal, and we had Mr. Rashid Khan. Thank you all so very much for attending and gracing this occasion. I think all these dignitaries have helped us make this event a great success. Thank you. Thank you. Thank you so